So let's continue our discussion. So in the last part, we talked about these things that we need to choose axis according to the problem. Alright? What is the best axis for the problem? And x, y, and z are independent of each other, right? And then we tried to find range, maximum height, time of flight, and we saw, like for time of flight, all we needed was just y-axis, right? And for other things, range, we needed time, which we got from y-axis and then in x. Okay. Now let's take a scenario, right, where we are launching a projectile on an inclined plane at an angle theta. Okay, this is angle theta. The inclined plane makes angle phi. Now here we have two choices of axis. One choice is this ground, horizontal. This is one choice. Right? X and Y. And there is another choice here for the axis, that is along the incline, along the incline. Let me change the color so it is visible clearly. Right? Let me call this x dash and y dash. Right? So which axis is suitable for finding when will it land on the incline? Okay? When will it land on the incline? Which axis is suitable? So if you take this y and x, we have no idea about what will be value of this coordinate when it lands, nor of this coordinate when it lands. Whereas if we take this as our axis, y dash and x dash, we know for sure that when it lands, this y dash coordinate would be 0.
displacement in y dash coordinate would be 0 when it lands. Alright. So let's take coordinate along this y dash and this x dash, because here we know the value of coordinates when it lands. So we'll need the angle, and the angle of velocity with x dash is theta minus phi. So velocity, initial velocity along y dash is u sine theta minus phi. Not only that, gravity also will have a component now. The force of gravity acting on this particle, alright, will also have a component. So if this angle is phi, this is 90 minus phi and this is phi. Just check it. This is phi, this is 90 degree. So this 90 minus phi and this becomes phi. So component of G along y dash is minus G cos phi. Alright. So if we use these three, we can get value of time. S is equal to ut plus half at square. 0 is equal to u sine theta minus phi into t minus g cos phi t square by 2. Solve it. You will get t is equal to 2u sine theta minus phi upon g cos phi. This is time of flight. You see how easy it was, because we were able to predict coordinate. So choice of coordinate for finding time of flight is definitely this x and this y. Now what I want you to try is try to find range. And when I begin in next class, alright, when I begin in next class, let's see, does I have better method? Right? This is the distance. ये distance मैं चाहता हूँ आप लोग निकालें range, और जो आपको समझ में आए करिए, गलत सलत hardly matters. Alright, I give you time to find the fastest way to get to this distance. Alright, और किताबों में तो वो inclined plane, projectile inclined plane का केस वेस बना देते हैं, बोलते हैं कि horizontal के बाद पढ़ाते हैं. नहीं, हम इस तरह से नहीं पढ़ते. हम तो ये पढ़ रहे भाई, ये दो प्रिंसिपल सीख रहे हैं, और ये जितनी सिचुएशंस में जल्दी जल्दी अलग अलग सिचुएशंस में अभी लगा लेंगे, उतना हमारे को सवाल सॉल्व करने में आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, इसलिए मैं दोनों मिक्स करता रहूँगा ताकि आपको एक्सिस चॉइस की भी थोड़ा दिमाग में जाए, और एक्स वाई जेड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट लेना है, ये भी साथ साथ प्रैक्टिस करें. फिर उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे ताकि आपको पता तो लगे क्या चीज़ कब अप्लाई करनी है. नहीं तो सिर्फ आप फॉर्मूले रट लेंगे रेंज के, मैक्सिमम हाइट के, ये रेंज का, ये मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का,
और आपको लगेगा प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे, ये बड़ा ट्रेडिशनल और पुराना तरीका पढ़ाने का, विच आई कंप्लीटली डिसएग्री विद। ऑलराइट, सो ट्राई टू फाइंड दिस रेंज। या आप पॉज कर लीजिए अभी, तो लेक्चर का कितना टाइम हुआ है इसी। ऑलराइट, वैसे तो है 10 मिनट और, बट आई थिंक यू नीड टू गिव मोर टाइम। यदि मैं अभी सोल्यूशन दे दूंगा तो आप लोग जो है बेसिकली क्या करेंगे, वही बिना ट्राई करे उसको देख लेंगे। सो लेट मी बिगिन माई नेक्स्ट लेक्चर विद हाउ टू फाइंड रेंज। ताकि कोई डाउट इसमें हुए तो वो भी ले लूँगा। ऑलराइट, थोड़े से लेक्चर्स की लेंथ 1 घंटे से भी कम होगी, बिकॉज बिलीव मी, जब क्लास में लेक्चर हम लेते हैं तो इट टेक्स अराउंड मोर देन 1 लेक्चर, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का लेक्चर होता है, क्योंकि उसमें बार बार हम बातचीत कर रहे होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अपनी मजबूरी है कि आपके डाउट्स मैं व्हाट्सएप पे लेता हूँ और फिर वो उसको लेने के बाद उसको इंक्लूड करता हूँ अगले लेक्चर में, और सिर्फ इतना ही पढ़ाता हूँ जिससे कि आपको कुछ मुद्दे वाली चीज़ मिले। और काइनेमेटिक्स 1D का भी शायद अभी आप लोगों का वो सोल्यूशंस अपलोड हुए हैं, तो थोड़ा सा अपना बैकलॉग भी चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैंने टाइम कम कर दिया लेक्चर का। बट रेस्ट एश्योर्ड हम लोग बहुत फंडामेंटल तरीके से चीज़ें सीख रहे हैं। ऑलराइट, जीके कंपोनेंट में आई होप देयर इज़ नो डाउट। ठीक है, सो दैट्स इट डन, थैंक यू।